Hi students, today we are going to begin exercise 2.1 of inverse trigonometric. Now before we begin the exercise, you should just have a basic knowledge of principal value branches of all the 6 inverse trigonometric function which we have already studied and 6 basic formulas जो आपने 11th standard में पढ़े थे. Sin of minus theta is minus sin theta, cosec of minus theta is minus cosec theta, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta is minus cot theta, but cos of minus theta is plus cos theta and sec of minus theta is plus sec theta. Okay, so what do we observe is कि जो बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें जो माइनस साइन है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं. सिर्फ cos और sec में it gives you a positive value. Okay students, so this is your math mentor and your friend Kaushal Ajogia. So let's begin. Now in the question he wants you to find the principal values of the following. Now let me just clear what is the meaning of principal value. Supposing मैं आपको पूछता हूँ कि cos इनवर्स ऑफ हाफ, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, कि cos फंक्शन के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है. ओके, सो cos इनवर्स ऑफ हाफ मीन्स cos फंक्शन के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है. सो यू वुड से दैट क्लियरली cos 60 इज हाफ, ऑल्सो वी कैन से cos 300 इज हाफ. लाइकवाइज वी गेट इनफाइनाइट सच वैल्यूज, बट इन सारे वैल्यूज में से हम लोग कौन सा एंगल चूज करेंगे. We are going to choose that angle which will satisfy the principal value branch of cos inverse. Okay, so you have to choose an angle between 0 to 180. So I think you know the answer. You are going to choose 60 degrees. You can't choose 300 degrees because you want the principal value of the cos inverse. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. पूरे एक्सरसाइज में हमको वो एंगल चूज करना है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता होगा. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. He wants you to find sin inverse of minus half. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. आपको एक सम बता देता हूँ, then you can easily understand the remaining one. So you start like this. Let sin inverse of minus half is equal to y. Now this sin inverse goes on the other side, so becomes sin. So you are going to say that sin y is equal to minus half. Okay, इतना करने के बाद you are just going to mention the principal value branch for sin inverse. So we are going to write like this. We know whatever known you can write down. The PVB means principal value branch for sin inverse is, you can say, minus pi by 2 to pi by 2. Okay students, now start with the equation what we had got. So we can say that sin y is equal to minus half. So sin के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है स्टूडेंट्स? sin 30 is half. Okay, so this half I am going to express like this. Sin y is equal to minus sin pi by 6. This half I am writing as sin pi by 6. Okay, minus sign को as it is रखा है. Now come over here. We know that minus sin theta can be written as sin of minus theta. So minus sin pi by 6 can be written as sin of minus pi by 6. Okay, and here we have sin of y. Now we can say that sin and sin let's cancel and you get y is equal to minus pi by 6. Now we have to check whether this lies in the principal value branch of sin inverse. ये एक्चुअली क्या है? माइनस 30 डिग्रीज एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स इज माइनस 90 to 90. Yes, so we very well know it lies in the principal value branch. So you can say that it belongs to the principal value branch which is minus pi by 2 to pi by 2. Therefore we can conclude कि y जो हमारा था what we had substituted which is sin inverse of minus half is equal to what? Minus of pi by 6. So that's your answer. Let's move to the next question. Okay students, so we begin with the second question. You want to find the principal values of cos inverse of root 3 by 2. So again we do the same procedure. So you are going to say let cos inverse of root 3 upon 2 is equal to y. Now this cos inverse goes on the other side, so you get cos y is equal to root 3 upon 2. Now we mentioned the PVB for cos inverse which is, you can say, 0 to pi. Okay, you start with the same equation. Since cos of y is equal to root 3 upon 2. Now students, cos के कौन से एंगल का वैल्यू रूट 3 by 2 होता है? It is 30 degrees. So you can say pi by 6. So you can say that cos of y is equal to cos of pi by 6. Now we can say that the value of y is pi by 6 and also it belongs to the PVB for cos inverse which is 0 to pi. So you can conclude that your y which was cos inverse of root 3 by 2 is equal to pi by 6. सिंपल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ स्टूडेंट्स, कब से मेरा मन ऑसिलेट हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 किया जाए कि नहीं किया जाए, आप खुद से कर पाओगे एंड सो ऑन, ऑल दैट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं.
सो मेरे दिल में ऐसे आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है कि सर आप रहने दो, हम लोग कर लेंगे. ओके, सो आई हैव डिसाइडेड टू लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Okay, so now you want to find the principal value of tan inverse of minus root 3. So again same procedure ही करना है आपको. So let tan inverse of minus root 3 is equal to y. तो tan को थोड़ा दुनिया घूमने दो. So tan y is equal to minus root 3. Now we mentioned the PVP for tan inverse, which is you can say minus pi by 2 to pi by 2. Okay, you start with the same equation since tan y is equal to minus of root 3. Now tan के कौन से एंगल का वैल्यू रूट 3 होता है स्टूडेंट्स? इट इज 60 डिग्री और यू कैन से पाई बाय 3. तो ये रूट 3 के बदले क्या लिखेंगे? tan y is equal to minus tan pi by 3. Now minus tan theta is tan of minus theta. So we are going to say minus tan pi by 3 is tan of minus pi by 3. तो इसलिए हमको मिलता है tan y is equal to minus tan pi by 3. So y is equal to minus pi by 3, which obviously belongs to the principal value branch of tan inverse, which is minus pi by 2 to pi by 2. Therefore you can say that tan inverse of minus root 3 is equal to minus pi by 3, and that is your answer. Let's move to the next one. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. ओके, जस्ट स्टे ट्यून. थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या अलग है. So we are going to begin with the same procedure now. So let cos inverse of minus half is equal to y. Cos को उधर भेज दो. So cos y is equal to, you are going to get minus half. Now we mentioned the PVP for cos inverse, which is you can say 0 to pi. ये इक्वेशन से चालू करो. Since cos y is equal to minus half. स्टूडेंट्स cos के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है? इट इज 60 डिग्रीज और पाई बाय 3. सो वी आर गोइंग टू से दैट cos y is equal to minus ऑफ, ये हाफ के बदले आई एम राइटिंग cos ऑफ पाई बाय 3. नाउ स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग ये सब सारे फॉर्मूलाज यूज कर रहे थे. माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, या तो माइनस टेन थीटा इज टेन ऑफ माइनस थीटा. बट व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा है, लेकिन हमको जरूरत है माइनस कॉस थीटा की. सो कैसे लेके आएंगे माइनस साइन? ओके, वी कांट यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो फॉर वेन एवर इन दिस एक्सरसाइज यू सी कॉस इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव एंगल और सेक इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव एंगल, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. देखो वो स्टेप क्या है. यू नो विद इन द अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड दैट कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है बोलो? cos of pi minus theta. Since it is pi, trigonometric function does not change. So I am going to write on cos theta, and you are entering second quadrant. वहाँ पे cos function नेगेटिव होता है, इसलिए you are going to get minus cos theta. So हम लोग इसकी मदद से minus cos theta को एक्सप्रेस करेंगे. ओके, सो ये एक्सरसाइज में जब भी आपको cos इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव एंगल दिखा या तो sec इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव एंगल दिखा, we are going to use the help of this concept. Okay students, so now we can clearly write minus cos theta as cos of pi minus theta. थीटा यहाँ पे क्या है? पाई बाय 3. सो वी गेट योर cos y. तो अभी सिंपल एलसीएम ले लो. सो वी आर गोइंग टू गेट 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाय 3. सो यू गेट cos of 2 पाई बाय 3. सो वी कैन से y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, विच ऑब्वियसली बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि ये होता है 120 डिग्रीज. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर व्हाट वाज योर y, विच इज यू कैन से cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. Simple. Let's move to the next one. Okay students, question number 6 is quite similar to question number 4, so I am just skipping that question. Let's come to question number 7. ये भी थोड़ा similar ही है, but टाइम पास कर लेते थोड़ा. So you can say let sec inverse of 2 upon root 3 is equal to y. So sec उधर जाएगा तो हो जाएगा sec y is equal to 2 upon root 3. Mention the PVP for sec inverse, which is you can say 0 to pi minus the point pi by 2. फिर ये इक्वेशन से चालू करो. So sec y is equal to you can say 2 upon root 3. sec के कौन से एंगल का वैल्यू 2 upon root 3 होता है? इट इज 30 डिग्री. सो यू कैन से पाई बाय 6. तो यू कैन से दैट sec y is equal to sec of pi by 6. तो we get the value of y as pi by 6, which obviously belongs to the PVB of sec inverse, which is 0 to pi minus the point pi by 2. So therefore you can conclude y, which is your sec inverse, which is 2 upon root 3, is equal to pi upon 6. Simple. Let's move to the next one. Okay students, question number 8 is again similar. Let's move to question number 9. So again ऐसा भी सम हम लोग ने किया है, but still let us practice again. So let cos inverse of minus 1 upon root 2 is equal to y. So therefore we can say that cos of y is equal to minus 1 upon root 2. Now mention the PVP for cos inverse, which is you can say 0 to pi. ये इक्वेशन से वापस चालू करो. So you can say therefore since cos of y is equal to minus 1 upon root 2. cos के कौन से एंगल का वैल्यू 1 upon root 2 होता है स्टूडेंट्स? 45 और pi by 4. So we can say that cos of y is equal to minus of cos pi by 4. Now can we use this formula? No.
कैन वी यूज अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट? यस। तो माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिखने वाला हूँ? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ओके, तो इसकी मदद से इसको एक्सप्रेस करो। सो वी कैन से दैट दिस एंगल कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। थोड़ा सा एलसीएम ले लो। सो यू आर गोइंग टू गेट कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 और यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ वाई। सो y इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 जो कि होता है 135 डिग्रीज, जो कि होता है विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई, विच इज द पीवीबी फॉर cos इनवर्स। सो देयरफॉर यू कैन से दैट cos इनवर्स ऑफ -1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। सो पूछा गया है तो बता देते हैं। सो लेट कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू y, उसको उधर भेज दो। सो कोसेक ऑफ y is equal to -√2. Mention the PVB for cosec inverse, which is you can say it is minus pi by 2, 2 pi by 2 minus the point 0. Start with the same equation. Since cosec y is equal to -√2. हमारे एक सर थे बचपन में, पता है since को क्या बोलते थे? Since, जाने दो, टाइम पास करता हूँ, आदत है। cosec of y is equal to, कोसेक के कौन से एंगल का वैल्यू √2 है स्टूडेंट्स? इट इज 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोसेक ऑफ पाई बाय 4। नाउ वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, माइनस कोसेक थीटा इज कोसेक ऑफ माइनस थीटा। सो वी आर गोइंग टू से कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4। ओके, सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू द पीवीबी फॉर कोसेक इनवर्स, विच इज यू कैन से माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 minus the point 0. So therefore you can say that cosec inverse of क्या था? -√2 is equal to minus pi by 4. Okay students, let's come to the 11th one. Students, एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे वो पीवीबी टेबल था वो मैंने निकाल लिया, जगह कम पड़ेगी, बहुत बड़ा सम है। ओके, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। अभी तक क्या था स्टूडेंट्स कि हम लोग के पास एक ही टर्म था, जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ, उसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो या तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। अभी बीच में क्या दिया है? प्लस, मतलब तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको ऐड करना है। ओके, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट द प्रोसीजर एंड इट्स वेरी सिंपल। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। सो यू कैन से लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू x ले लो, क्योंकि 3 टर्म है तो हम लोग x y z ले लेंगे। सो वी कैन से दैट tan ऑफ x इज इक्वल टू 1। नाउ tan के पीवीबी मेंशन कर लो। पीवीबी फॉर tan इनवर्स इज क्या है? पीवीबी बोलो, इट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, नाउ वी कैन से दैट tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स? इट इज पाई बाय 4। तो 1 को लिख देंगे tan ऑफ पाई बाय 4। देयरफॉर यू कैन से दैट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सो देयरफॉर यू कैन कंक्लूड दैट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। सो नाउ लेट कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ इज इक्वल टू y ले लो। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कॉस ऑफ y इज इक्वल टू -हाफ। फिर क्या बोलेंगे? पीवीबी फॉर कॉस इनवर्स इज क्या था? 0 टू पाई। नाउ वी स्टार्ट विद दिस इक्वेशन। तो यू आर गोइंग टू से दैट cos of y is equal to हाफ को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इट इज 60 डिग्रीज। तो आई एम गोइंग टू राइट अप माइनस ऑफ cos पाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माइनस cos थीटा को हमको क्या लिखना है? cos पाई माइनस थीटा। सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट अप cos y इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। सो वी कैन से दैट cos y इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई बाय 3। ओके, सो y का वैल्यू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट्स? इट इज 2 पाई बाय 3 विच बिलोंग्स टू द पीवीबी फॉर cos इनवर्स। सो देयरफॉर यू कैन से y जो हमारा था यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ -हाफ इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? विल स्टार्ट विद द थर्ड टर्म, sin इनवर्स। तो उसको z ले लो। सो यहाँ पे देखो अभी, सो लेट sin इनवर्स ऑफ -हाफ इज इक्वल टू z। ये उसको वहाँ पे लेके जाओ। सो यू गेट साइन ऑफ z इज इक्वल टू -हाफ। फिर पीवीबी मेंशन करो। पीवीबी फॉर साइन इनवर्स इज क्या है? बोलो साइन इनवर्स का पीवीबी इट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हाफ को क्या लिखेंगे? वी कैन राइट 30 डिग्रीज और साइन पाई बाय 6। तो वी आर गोइंग टू से साइन z इज इक्वल टू माइनस साइन
pi by 6. But minus sin theta can be written as sin of minus theta. So we are going to say sin of z is equal to sin of minus pi by 6. So यहाँ से हमको z का वैल्यू मिल जाएगा, which is you can say minus pi by 6, which belongs to the PVB for sin inverse, which is minus pi by 2 to pi by 2. So therefore z क्या था हमारा sin inverse. So sin inverse of you can say minus 1 upon 2 is equal to minus pi by 6. This is your equation number 3. Now students, what is the next step? We want to add all the three values. So therefore you can say that tan inverse of 1 plus sin inverse of cos inverse of minus half plus sin inverse of minus half is equal to, इसका वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है? इक्वेशन नंबर 1 विच इज पाई बाय 4. इसका वैल्यू क्या था? cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज इन इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई बाय 3 एंड sin इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इज माइनस पाई बाय 6 विच इज इन इक्वेशन नंबर 3. So from 1, 2 and 3 you mention the reason over here. So now we can say that if you simplify, यहाँ पे देखो LCM हमको क्या आ रहा है 12. So यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3. So 3 पाई प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4. So you are going to get 8 पाई and यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2. So minus 2 पाई upon 12. So if you simplify you get 11 पाई minus 2 पाई which is 9 पाई by 12 which is you can say 3 पाई by 4. समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, सो आ गए हम लोग 12th सम पे. यू वांट टू फाइंड cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ. अब ये पिछले सम से थोड़ा सा छोटा है बिकॉज यू जस्ट हैव टू टर्म्स, cos इनवर्स ऑफ हाफ और sin इनवर्स ऑफ हाफ. तो इसको x ले लो और इसको y ले लो, दोनों का वैल्यूज फाइंड करो, ये इक्वेशन में पुट कर दो. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म. यू कैन से लेट cos इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू x. सो देयरफॉर यू कैन से दैट cos x इज इक्वल टू हाफ. फिर क्या लिखेंगे? PVB. PVB फॉर cos इनवर्स इज 0 to pi. Now we say since cos x is equal to half, so therefore you can say that cos x is equal to cos के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है स्टूडेंट्स? इट इज 60 degrees. So you are going to say cos of pi by 3. So therefore you get x is equal to pi by 3, which obviously belongs to the PVB for cos inverse. So therefore हमको मिल गया x is pi by 3, which is you can say cos inverse of half. Okay students, so that is pi by 3. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो. Next step you very well know. Let's move to sin inverse. So you can say that let sin inverse of half is equal to y. Now students, we are not considering this number 2. हाँ, सिर्फ हम लोग इनवर्स फंक्शन वाले टर्म को कंसीडर कर रहे हैं. तो वैल्यू ढूंढने के बाद ये इक्वेशन में जब भी पुट करेंगे तो 2 को तभी कंसीडर कर लेंगे. ओके, सो वापस वही प्रोसीजर करो. यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ. सो यू कैन से दैट sin y इज इक्वल टू हाफ. साइन के कौन से एंगल का वैल्यू हाफ होता है स्टूडेंट्स? इट इज 30 डिग्री, लेकिन वो स्टेप बाद में आएगा. So PVB for sin inverse is you can say minus pi by 2 to pi by 2. Okay, तो वो स्टेप मैंने बोल दिया. So हाफ को रिप्लेस करेंगे हम लोग pi by 6 से. So you get pi by 6. तो y का वैल्यू हमको मिल चुका है pi by 6, which belongs to the PVB for sin inverse which is minus pi by 2 to pi by 2. So therefore you can say that sin inverse of half is equal to pi by 6. Equation number 2. Now students, we can say that therefore you write the same equation again, cos inverse of half plus 2 times sin inverse of half is equal to cos inverse of half का वैल्यू कहाँ पे छुपा है? इट इज इन इक्वेशन नंबर 1 which is pi by 3 और 2 as it is लिखो और इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में से आपको मिल जाएगा which is pi by 6. यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2. So if you simplify this you get pi by 3 plus pi by 3 and you get 2 pi by 3. That's your answer. Let's move to the next one. Okay students, in the question number 13 and 14 they are MCQ type questions. So let us begin with the 13th one. If sin inverse of x is y, then what is the condition? Sin inverse of x is y means what? कि y should lie in the principal value branch of sin inverse. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करता है कि y is lying in the principal value branch of sin inverse? So if you carefully observe, it is option number B, because we very well know कि principal value branch for sin inverse is what? Minus pi by 2 to pi by 2. And if you observe, he has put equality sign less than equal to sign over here. So it is option number B. So you can't choose option number D students, क्योंकि अगर ये आप D चूज करते हो तो आप ये बोल रहे हो कि principal value branch of sin inverse is minus pi by 2 to pi by 2 with the open interval. No,
since it is closed interval, so you have to choose option number B. Now students, in the question number 14, he wants you to find tan inverse of root 3 minus sec inverse of minus 2. तो ऐसे सम हम लोग ने अभी जस्ट रिसेंटली वी हैव सॉल्व्ड. सो व्हाट डू वी डू इज इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं. ओके, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बट सिंस ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ब्रीफ में करेंगे. वी डोंट शो द थियरी स्टेप्स. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. लेट tan इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू x. तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा tan x इज रूट 3, और tan के कौन से एंगल का वैल्यू रूट 3 होता है स्टूडेंट्स? इट इज 60 डिग्री. So you are going to write pi by 3. तो डायरेक्टली x का वैल्यू pi by 3 लिख लो and just check in your mind कि whether this lies in the PVB for tan inverse. Yes, it lies because tan inverse का PVB is from minus 90 to 90. Okay, let's move to the next one. Sec inverse of minus 2. उसको क्या ले लेंगे? y ले लो. Students, ये minus sign we are not considering, just taking this term. So we can say that sec of y is equal to minus 2. Now sec के कौन से एंगल का वैल्यू 2 होता है स्टूडेंट्स? इट इज 60 degrees. Okay, so we can say it is sec of pi by 3. Okay, now we'll make use of the allied angle concept, क्योंकि आपको बोला था cos inverse of negative angle आया और sec inverse of negative angle आया, तो make use of allied angle concept. तो we very well know that sec of pi minus theta is minus sec theta. Okay, so that's why we are going to say sec of y is equal to sec of pi minus pi by 3. So if you take LCM, you are going to get sec y is equal to sec 2 pi by 3. So y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2 pi by 3 which lies in the PVB for sec inverse. So just put in this equation now. इसका वैल्यू है pi by 3 and यहाँ पे इसका वैल्यू मिला है हमको 2 pi by 3. So if you take LCM, तो ये हो जाएगा pi minus, you are going to get minus pi by 3. So your option is number B. So students, I hope you have understood exercise 2.1 very nicely. In the next lecture, I begin with exercise 2.2. Please like, share and subscribe my channel. Take care and goodbye.